Hey guys, what's up? So today we're going to deal with a very important topic, the last part of fundamental rights, and this is the third part. And welcome back to Polity Portions. We will have this on Monday to Friday at 9 p.m. So let's get started right into it. So first of all, like we have covered basic fundamental rights except Article 32 to 35, which we will cover later on. But let us first start with it because these are the main fundamental rights. So let us start with the criticism of fundamental rights. A lot of people criticize it because of a lot of issues and that there are a lot of exceptions. But let's codify them. What are the main reasons why they criticize it? Okay. So first is excessive limitations. One is excessive limitation. So this is the first and most important point, that there are a lot of limitations which are there. Just let me check the setup once. Yeah, sorry for that. So the first and the foremost is the excessive limitations which are there on the fundamental rights. So like no fundamental right except maybe Article 17 and to some extent the first part of Article 25. Except them, every right has some limitations or the other. So that is the most important thing which you need to understand. So that is why a lot of people criticize it, that it is not fundamental in any way. It is not fundamental rights. They have a lot of exceptions. So this is the first and the foremost thing. The second point is they are very political in nature. Okay, most of them are political in nature. Very few are social or economic in nature. So this is the second criticism why people don't like fundamental rights, especially here. And socio-economic rights are basically under directive principles of state policy and they are not anyway enforceable in a court of law. Okay. Then the third point is there is an ambiguity in the language. So the language is not clear and a lot of ambiguity is there. So nobody is clear as to what they are trying to suggest. It's a double meaning statement sometimes. And once you say, if you just read between the lines, there is right to freedom of expression. But then anytime you say something, you can be booked under a court of law. So these are the things which you need to understand. Then the fourth point is they are not permanent. They can be amended by the parliament whenever they want. Anything can be amended except a very few part which constitutes the basic feature of the constitution. And the fifth one is like presence of preventive detention. Fundamental rights in no democracy of the world usually, and taking the word usually, preventive detention is allowed except in India where it is like an integral part of the fundamental rights. So there is no right to life and liberty technically. Like with the court and the police, they can anytime arrest you on the behest of preventive detention. And the sixth point is they can be suspended during emergency. So this is again a very, very important point, that fundamental rights are not permanent, they can be amended, and especially in case of emergency, they can be completely suspended. Now, what are the significance? So the second point which you need to understand, okay, we have understood the limitations. So let us talk about the significance of fundamental rights. So fundamental rights are really, really significant also because first of all, they are legally enforceable in a court of law. Unlike directive principles of state policy, unlike preamble, unlike fundamental duty, ये जो हमारे जो fundamental rights हैं, इनको आप कोर्ट में जाके आप इनके लिए लड़ सकते हो. उस पर हमारा अलग से डिटेल में आएंगे. फिर दूसरा है, they are the backbone, they are the heart, they are the soul of the constitution, along with let's say directive principles. उन दोनों को मिलाकर के ही constitution का main framework बनता है. ठीक है, they will protect your individual liberty under Article 21 and this ensures establishment of rule of law. Rule of law का मतलब मैंने आपको explain किया था, प्रोफेसर डाइसी concept बताए थे. So just watch the episode 5 of Polity Portions. It is 2/3 of fundamental rights. Then we are secular in nature, so it protects all the religion and minorities. Very few countries in the world where the majority population is of one religion are secular in nature in truest sense. India is one of those countries which are like really, really secular in like essence as well as word. You will find like Gurudwara, mosque. If you go to Chandni Chowk, you will find Gurudwara, you will find a temple, you will find a Jain temple, you will find a Jama Masjid, like all there within a vicinity of a kilometer. So like truest sense of the word, India is secular. Then you will find like there is against huge check and balance against arbitrary action of let's say right to life will not allow executive / legislature to just kill you. They can't like फांसी में नहीं लटका सकते आपको because Article 21 does not allow it. So arbitrary action of executive and legislature is not allowed here. Then they respect the dignity of individual and they will help in realization of full potential
by encouraging their participation in nation building. So these are the basic significance of fundamental rights. So now let's talk about a very very important right, that is Article 32, that is right to constitutional remedy. See, there are two concepts to it. First of all, this right is required to enforce the other fundamental rights. But unlike Article 226, Article 226 is also does the exact same thing with some variation. But this is not a fundamental right. Article 32 is a fundamental right. So even if you go to Supreme Court and say that some writ has to be filed, that is your fundamental right. Not in the case of High Court. High Court can reject it. Supreme Court can't. So that is a major difference. And obviously High Court has a very limited jurisdiction of its state. Supreme Court has a huge jurisdiction of entire country, and so on and so forth. So Ambedkar, Dr. Ambedkar described it as very important, because just if you declare that there are fundamental rights, there is no use. People are not going to follow it unless you put some remedy to it. Okay, and they will provide an effective machinery for its enforcement. This is the word that was used. So it is right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen, and it can be anything, it can be related to anything. So right to get fundamental right enforced is itself a fundamental right, so that is like a really big deal, and that is why Dr. Ambedkar has called the Article 32 as heart and soul of the entire constitution, without which constitution will be a nullity. So if they ask you which article is called as the heart and soul of the constitution by Dr. Ambedkar, then the answer is Article 32. जो Article 32 है, इसको heart and soul बताया जाता है constitution का, because without which the complete constitution will fall apart. It's a nullity apart from that. A father of constitution इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कुछ तो important होगा इसमें. So अब और भी एक important बात बताता हूँ. जो Article 32 है, that is considered a basic structure of the constitution according to the Supreme Court. इसको कोई amend नहीं कर सकता. ठीक है, ये भी important है. It is a basic feature of the constitution. It cannot be amended at all. इसमें चार major provisions हैं. सबसे पहले है कि when the fundamental right is threatened, you can move to Supreme Court for appropriate enforcement. दूसरा है Supreme Court has the power to issue directions or orders, and in case these are not sufficient, they can issue even writs. I'll tell you the difference between them, for the enforcement of all the fundamental rights or any of the fundamental rights. ठीक है. Now again very important, Parliament can make laws to empower other courts to issue fundamental rights, though it is not done, and it does not include High Court here. Okay, it is already, because High Court already have under Article 226, it is not done right now. And if there is a national emergency under Article, let's say 359 says that, then you can't go to Supreme Court. That is the only exception you have. So if there is a national emergency, the right to move to Supreme Court can be suspended. That is the only condition. No other condition is there where you are not allowed to move to Supreme Court. Now, Supreme Court has the original and wide approach in this. Original here means Supreme Court can go directly with or without appeal also, and wide means just they can't issue orders but even directions and writs also. So that is the difference. And they have they can give effective. Effective means giving the right result. Expeditious means fastly. Inexpensive means people should not be have to spend lakhs and lakhs of rupees for that. And summary remedy means final termination to protect the fundamental rights. And now again very important, the difference is under Article 32 only fundamental rights can be enforced, while under Article 226 all the legal rights can be enforced. So that is also very big difference. And so jurisdiction of Supreme Court is original but not exclusive. What do you mean by this? High Court also can do the same under Article 226. For example, if your right is violated, let's say right to freedom of expression, and you go to High Court. So Supreme Court can't say कि नहीं तुम हमारे पास ही आओगे, ऐसा कुछ नहीं है. Both of them are allowed. High Court and Supreme Court mixture is allowed. So please remember that point very clearly. And it is concurrent with the jurisdiction of High Court under Article 226. That is, you can directly approach to High Court or Supreme Court. And when relief through High Court is available under Article 226, this is important. अगर High Court के अंदर available है, then the aggrieved party should first move to the High Court. बस ये याद रखना. चलो वो तो सब हो गया हमारा, ये बेसिक्स थे. क्या डिफरेंस हुए? Article 32 is only for fundamental rights. Article 226 is for both fundamental rights as well as legal rights. Supreme Court can't refuse. High Court might refuse. Then the third point is Supreme Court is all over India. High Court जो होगा सिर्फ एक state specific होगा. ये major difference है 32 और 226 के बीच में. ठीक है? Now both the courts, that is Supreme Court and High Court, can issue 5 writs.
So these are important terms, so I will mention here. The first is habeas corpus, okay, then you have quo warranto, then you have certiorari, then you have prohibition, and finally you have mandamus. Please remember this by heart, and this is asked a lot in MCQs and mains exams. And what is the difference, match the following, ये बहुत पूछते हैं इसमें. तो let's start with this. Parliament under Article 32, as I have already spoken, Supreme Court and High Court can already issue these 5 writs, but Parliament under Article 32 can empower other courts to issue the writs, though it is not done. Parliament can do it, Supreme Court नहीं कर सकता, Parliament कर सकता है. तो power with respect to writ jurisdiction क्या है, ठीक है. सबसे पहले तो Supreme Court can do it only for fundamental rights. They have narrower powers. High Court have wider power because they can do it for fundamental as well as legal right. सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी बड़ी है क्योंकि पूरा इंडिया आता है उसमें, और हाई कोर्ट मे रिफ्यूज टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 क्योंकि 226 आर्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट आर्टिकल 32 बीइंग अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज इट, सो इट इज द अल्टीमेट डिफेंडर इन द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है. कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, हेबियस का मतलब टू हैव अ बॉडी. इसका मतलब है कि मान लो कि कल आपको कोई जबरदस्ती कहीं रूम में बंद कर दे और आपका बाहर से ताला लगा दे और आपको कोई किडनैप वाली सिचुएशन हो जाए. सो ऑब्वियसली यू कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि भाई मेरे को यहाँ पे किडनैप कर रखा है, बट एनीबडी ऑन योर बिहाफ कैन फाइल अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट, एनीवन, मे बी योर ब्रदर, फ्रेंड और लाइक अ नॉट एट ऑल रिलेटेड पर्सन, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर obviously arrest हुआ है legally तो सुप्रीम कोर्ट does not do anything, but if it is an illegal detention then सुप्रीम कोर्ट will issue the writ of habeas corpus कि आपकी बॉडी प्रेजेंट करी जाए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप अच्छे भले हो कि नहीं, ठीक है. So it is order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of it, to examine the cause, भाई क्यों डिटेन किया गया है, and legality of detention, ठीक है. And if the detention is illegal तो आपको obviously set free कर दिया जाएगा. So it is protection of individual liberty. कल को पुलिस आपको जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकती. So against arbitrary detention ये आपका आर्टिकल 32 की फर्स्ट रेट है, ठीक है. अगेन इट इज बोथ अगेंस्ट सिटीजन एज वेल एज लाइक स्टेट. ये जो राइट है आपको मान लो स्टेट, एक तो स्टेट की एजेंसीज हो गई सीबीआई पुलिस वगैरह, लेकिन दूसरा अगर कोई सिटीजन भी आपको अरेस्ट करता है, आपका नेबर या आपको डिटेन करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको अवेलेबल है. एक होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी. लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है ओनली दीज आर अलाउड टू गो टू द कोर्ट. यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, इट कैन नॉट अप्लाई, राइट, यू आर ऑलरेडी डिटेन्ड, हाउ विल यू गो टू कोर्ट. तो सिंपल सी बात है. एंड रिट इज नॉट इशूड इफ द डिटेंशन इज लॉफुल. सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अरेस्ट किया जा सकता है ना, बहुत सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मर्डर वगैरह आपने किसी का किया तो ऑब्वियसली आपको लीगली डिटेन किया जाएगा उसमें. इफ यू हैव कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर, मतलब कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली या फिर कोर्ट, उस केस में भी इशू नहीं होगा, ठीक है. फिर डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद कर दिया और इट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. आप वेस्ट बंगाल में जाके राजस्थान का केस नहीं बोल सकते करने के लिए. दूसरा है मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. वी कमांड का मतलब है कि कोर्ट एक पब्लिक ऑफिशियल को बोल रहा है कि why are you not doing your official duties which either he has failed to perform or refused to perform. Let's say कि आपके स्कूल है और वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनना है, तो the official who is responsible for that is not doing anything और आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, डिले हो रहा है, तो 100-200 लोगों का वहाँ पे, तो उस केस में you can go and ask for a mandamus. The court can issue भाई क्यों नहीं हो रहा, why are you failing to perform your duty, ठीक है. In that case there are some specific issues which they can be done. Now it can be filed only by the aggrieved person. ऐसा नहीं है कि आपके भाई बहन जाके इसमें फाइल करेंगे. So principle of locus standi will apply. Only those who are aggrieved by it will be able to file it. So very important concept. Please remember it. Then the third is, now it cannot be issued against a private individual or body. For example, अगर Hotstar पे IPL नहीं आ रहा तो you can't go to Supreme Court कि they are not performing their duty. It can only be done through state agencies. Now it cannot be done to enforce departmental instructions alone that does not have statutory forces. मतलब उसका स्टैट्यूटरी फोर्स होना बहुत जरूरी है, मतलब आपका एक लीगल राइट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि डिपार्टमेंट में कोई डिले हो गई, आपकी एप्लीकेशन चिट्ठी आगे नहीं जा रही, उन चीजों के लिए नहीं है. अगर ड्यूटी डिस्क्रेशनरी है तो उस केस में अप्लाई नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो उसके डिस्क्रेशन पे है, मैंडेटरी नहीं है ड्यूटी. फिर चौथा है टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. इसका मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए नहीं किया जा सकता. और फाइनली प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, ठीक है. तो प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. सो फिर है आपका प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड.
इसका मतलब है कि अगर किसी केस में मान लो कि किसी लोअर कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है, लेट्स से एक छोटा कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी नीचे है, एंड दे कांट ट्राई फॉर मर्डर, दे कांट लाइक गिव डेथ सेंटेंस टू पीपल, सो इन दैट केस हायर कोर्ट जो होगा वो उसको बोलेगा हाई कोर्ट की यार आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, इट इज अगेंस्ट, यू आर एक्सीडिंग और असर्पिंग योर जुरिसडिक्शन, ठीक है। अगेन सो मान लो कि दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डील विद लाइक कैपिटल पनिशमेंट वाले केस, so high court will say कि please stop it right now, I will take the case, and it can be issued obviously against only legislative and quasi judicial, तो मतलब बेसिकली अपने जितना उसकी वो है उसके बाहर जाकर के वो कुछ करना चाहते हैं, जितना उनका लीगल जुरिसडिक्शन है उसके बाहर जाके अगर वो कोई केस करने की कोशिश करता है कोर्ट, तो जो हायर कोर्ट है उसका वो बोल देगा कि भाई आप रहने दो, आई विल डू इट। फॉर एग्जांपल सर्टेन थिंग्स ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन टेक, नॉट हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कैन लाइक से टू हाई कोर्ट आल्सो कि डोंट डू दिस प्लीज, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस। अब सर्शियोररी का क्या मतलब होता है, बेसिकली टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म। इस केस में दो चीजें हो सकती है सर्शियोररी के केस में, या तो वो ये बोल सकते हैं कि आप ट्रांसफर केस कर दो हाई लोअर कोर्ट को बोल के कि ट्रांसफर कर दो, या फिर अगर आपने जजमेंट दे दिया है, यू हैव ऑलरेडी गिवन द जजमेंट, in that case it is terminated, it is completely terminated, so you can squash the order, okay, if it is excessive of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law, if basically you gave the wrong judgment and wrong punishment, the higher court can do it. So prohibition is only preventive in nature, just remember P for P, while certiorari is both preventive as well as curative, क्योंकि इस केस में अगर जजमेंट ऑलरेडी पास हो गया है तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को मना कर सकता है, ठीक है। जो अभी तक क्या होता था प्रोहिबिशन में, सर्शियोररी इज आल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज, इट इज ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये याद रखना आप, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, लेट्स से कोई इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इन दैट केस द कोर्ट कैन से कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू ऑक्यूपाइंग इट, okay, so it is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person, ki by what authority he is occupying a public office, okay, and it will prevent the illegal usurpation of public office by a person, मतलब गलती से मान लो कि कोई सिविल सर्वेंट बन गया कुछ फेक करके, so in that case it can be issued, and then it can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character which is created by a statute or the constitution, ऐसे छोटे मोटे ऑफिस के लिए नहीं होगा, it has to be permanent in character which is by statute मतलब law and constitution, and it cannot be issued in case of ministerial office or private office, तो ये याद रखना होगा। Now let us talk about article 33, that is armed forces and fundamental rights, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आर्टिकल 33 कहता है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन पे सारे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऑब्वियसली दे कांट असेंबल, एलओसी पे लड़ाई चल रही है, दे कांट असेंबल, दे कांट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच कि ये गलत हो रहा है सब कुछ, तो ऑब्वियसली तो पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज क्या क्या होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज आपको पता ही होगा तीन होती है मेजरली, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है बहुत सारी होती हैं, सीआरपीएफ वगैरह, फिर पुलिस फोर्सेज होती है आपकी, ठीक है, सो ये सब आपको पता होना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, पुलिस फोर्सेज होती हैं, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, तो जैसे आपने सुना होगा आपने आईटीबीपी है, जैसे असम राइफल्स हैं, देयर आर सो मेनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस एम्बिट। इसमें क्या होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब आईबी रॉ वाले जो लोग होते हैं हमारे, सो जो इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज हु आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, मतलब हो सकता है कि जो खाना बनाते हैं उनके लिए भी वहां पे जो है ना, सो दे आर डन फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट देम। फिर लॉ सेज दैट ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट, ओके, नो वन एल्स कैन डू इट, तो ये भी याद रखना, and they cannot be challenged on the violation of fundamental rights, obviously they are violating their fundamental rights, but it cannot be challenged, okay. It can also exclude the court martials, so that is also important. What are court martials? They are basically tribunals which are established under the military law where they can try and give severe punishment in court martials, so just remember that. And the high court and supreme court can't intervene in that also, so just remember that. Now article 34 talks about the martial law. पहली बात तो किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया मार्शियल लॉ होता क्या है, बट जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उससे ही होता है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो आर्म्ड फोर्सेस कैन टेक ओवर दैट रीजन एंड दे कैन लाइक शूट पीपल एंड दे कैन किल पीपल एंड कुछ भी कर सकते हैं, उस केस में उनका ऊपर ये मतलब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के चार्जेस नहीं लगेंगे। एक लाइन में बताऊं तो
सो इट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आपको बोल दो कि आज के बाद घर से नहीं निकलना है किसी को, ठीक है, तो 6 बजे के बाद। सो इट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर इट विल एम्पावर द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब होता है आपने कुछ भी गलत किया है तो उसकी आपको माफी मिल जाएगी, टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और अदर्स फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम और हर इन अकॉर्डेंस विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया। मान लो कि लाठी चार्ज कर दिया, किसी को मार दिया, तो दैट जस्ट टू एंश्योर द ऑर्डर, जैसे भी वहां पे हुआ था अपने जो पंचकुला वाले केस में, मान लो कि मर गया, तो उस केस में आप इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली दैट इज नॉट मार्शल लॉ, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। सो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट इट शुड बी ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे नहीं उनके मतलब आपने गहने चुरा लिए और ये सब कर लिया, दैट इज सेपरेट, बट इफ यू आर जस्ट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स देन इट कांट बी judicially reviewed. Now martial law, which is also called as military rule, it is not defined anywhere in the constitution of India, ये बस हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस केस में it is run by the military authorities, they have their own rules, they have their own regulations and they are outside the ordinary law, implying like complete suspension of ordinary law and the government by military tribunals। तो बहुत ही तो यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में इम्पोज होते हैं, जैसे नॉर्मली नहीं होते, जैसे वॉर हो गया, इन्वेजन हो गया, इंसरेक्शन हो गया, रिबेलियन, रायट, वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ टू रिपेल फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। इतनी जल्दी आर्मी को नहीं बुलाया जाता है, बहुत ही जब सीरियस कोई इशू होता है तभी इनको ये होता है, ठीक है। फिर दे हैव लाइक एबनॉर्मल पावर्स इंक्लूडिंग imposing restrictions and regulations on the rights of civilians, they can punish the civilians, even condemn them to death। तो ये भी आप याद रखना, उस केस में भी इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शियल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रेट ऑफ द हेबियस कॉर्पस, कि जस्ट बिकॉज कहीं मार्शियल लॉ है इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे हेबियस कॉर्पस की रेट नहीं लगेगी, मतलब लगाई जा सकती है। नाउ देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शियल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मार्शियल लॉ एक छोटे से एरिया में लगता है, बहुत ही छोटे से एरिया में, बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया में। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लग सकती है, फिर आधे इंडिया में लग सकती है, फिर 1/3 में लग सकती है, बहुत बड़ा उसका स्कोप होता है। जो मार्शल लॉ होता है दैट अफेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स, जो नेशनल इमरजेंसी होती है दैट अफेक्ट्स सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बहुत ही ब्रॉडर स्कोप होता है। जो मिलिट्री लॉ होता है दैट सस्पेंड्स ऑर्डिनरी लॉ, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स, बट नेशनल इमरजेंसी में सब चलता है, ऑर्डिनरी लॉ, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स चलता है वहां पे। So जो मार्शल लॉ होता है it is imposed to like restore the breakdown of the law and order due to any reason, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, कोई मान लो किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, उसके भक्तों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी वो सिर्फ 3 ग्राउंड पे लग सकती है, ठीक है, वो आपको मैंने बता रखे हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। फिर ओनली इन सम एरिया ऑफ द कंट्री, मैं आपको बता चुका हूँ नेशनल इमरजेंसी कैन बी सम एरिया ऑफ द कंट्री और एंटायर एरिया ऑफ द कंट्री। और जो मार्शल लॉ है इम्प्लिसिट है, कहीं मेंशन्ड नहीं है कि इस आर्टिकल में ऐसे लगेगा, बट जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 352। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 35 दैट इज लॉज फॉर अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें यही बोलता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉट ऑफ लॉज, ओनली द पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट। अगर वो स्टेट लिस्ट में आता भी है तो भी स्टेट नहीं बना सकता, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो जैसे मान लो कि प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस अंडर द कंडीशन अंडर आर्टिकल 16, तो इस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है कि एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स एक्सेट्रा, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। देन रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली अंडर आर्टिकल 34 like they can indemnify any person who is restoring the law and order, so that is article 35. Obviously parliament can also make laws, let's say article 17 says untouchability nahi hogi, so parliament can make a law against untouchability. Then article 23 says ki forced labor, mega traffic nahi hoga, so again parliament can make laws related to that. And it also says that law which are before independence will continue as such, unme koi change nahi aayega। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है इसमें, व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो इसमें आपको ये बात समझने की है कि पहले फंडामेंटल राइट था, अभी लीगल राइट बचा है, ठीक है। पहले 19(1)(f) में था और आर्टिकल 31 में था, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। एंड अब क्या है कि इट इज जस्ट अ लीगल राइट,
So 44th Constitutional Amendment Act of 1978 removed Article 31, removed Article 19(1)(f), and now it is just right to property under Article 300 in Part 12. तो इसका वजह से मतलब है कि except by authority of law, no person shall be deprived of their property. तो इसमें क्या होता है कि लीगल राइट हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली अपने एनफोर्सिबिलिटी के लिए. इसको अगर चेंज भी करना है कल को तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए. इट इज प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन. तो कल को लॉ बन जाता है कि मान लो कि किसी के पास भी 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होगी तो सारी ले ली जाएगी. मान लो लैंड सीलिंग एक्ट इसी का एग्जांपल है. फिर चौथा है नो सुप्रीम कोर्ट, यू कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and only under high court under article 226, and that is discretionary to the high court, and there is no guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of property. So आपकी पूरी land estate ले सकता है without any guarantee to there, but obviously there are like good laws now which will ensure कि वरना तो chaos हो जाएगा. But still there are exceptions to state acquisition. State can't acquire your cultivable land if it is under sealing. मान लो कि sealing act होती है, state by state vary करती है. तो अगर आपका लैंड उसमें फॉल करता है स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट में, सो देन नोबडी कैन टेक इट वेयर. ओके. एंड सेकंड इज व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30, सो इवन इन दैट केस इट कांट बी डन. सो दीज आर द टू केसेस वेयर अ compensation is guaranteed. So this was all about fundamental rights. I think we have covered everything which we need to understand. So yeah, so we will meet tomorrow at 9 p.m. and we will discuss directive principles of state policy. So that is your homework. So please, like I'll put the description of this, the link of this course in the description. So thank you for watching Polity Motions with Roman. Have an awesome day.